Which of these companies is not owned by Facebook? टेक तो मेरे वास्ते फोन लैपटॉप ही रहा है हमेशा से. And if you call Instagram, Snapchat as technology, I am technology guruma. So I'll go with C, Twitter. गौरव, अब जब सोशल मीडिया की गुरु माँ ने हमें जवाब दे दिया है सोशल मीडिया से जुड़े हुए सवाल का, तो आई मस्ट इन्फॉर्म कि सी इज द राइट आंसर. अभी असना की नजर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहां पे वो 16,000 रुपए कमा सकती हैं. पर हमारी नजर है आप पे, क्योंकि आप बताएंगी कौन पूछेगा आपसे सवाल. I will go with environment. Arun with environment. Another lovely smile. We're full of lovely smiles over here. We're full of lovely smiles. So one lovely smile will ask the other lovely smile a lovely question which will make all of us smile. Go for it. You're from Hyderabad, am I right? पक्की हैदराबादी. Now, could you tell us any story at all related to Hyderabad, Hyderabad's water, the Hussain Sagar, the Musi, any story that your parents, grandparents have told you how the city used to flood and what the city did, what the Nizam did, or what Sir Vishweshwaraya did, anything at all from childhood? Recently जो floods आए थे, I've read a lot of, I did read about it online कि because of the Nizam's architecture कितना की save हुआ है and all that, but I cannot explain. Yes, but you've actually given a good trigger, because most often Hyderabad gets associated with the monuments or with the biryani, right? But Hyderabad has a water story to tell. But my question is not related to that now. We'll do that in another episode. As you know, water is what differentiates Earth from other planets. But water's impurities in water is what causes several diseases. As a doctor, I'm sure you're facing that across many patients that you see. My question to you here is related to impurities in water and a cleansing agent. Alum is used in the purification of drinking water for which of these purposes? A, coagulation of mud particles. B, add more oxygen. C, remove salts. D, remove gases. स्कूल में पढ़े थे, so the sedimentation process and filtration process, उस सब में you put alum, sewage water में you put alum. There's something that there's a history behind it. है, theory है. So what alum does is it coagulates the mud particles. Then वहाँ से there's filtration going on, something like that. So I'll go with A, coagulation of mud particles. असना, आप आंसर दे रही है कि क्वेश्चन पूछ रही है? नहीं, मैं आंसर दे रही हूँ. A, coagulation of mud particles. पक्का? श्योर? Yes, sure. एक्सीलेंट. थोड़ा सा डाउट लग रहा था, पर अब जब दूसरी बार उनसे पूछा तो डाउट नहीं लग रहा है कि अब बिल्कुल श्योर है. तो आइए तो फिर ग्रे कर देते हैं इसको. कोएगुलेशन ऑफ मड पार्टिकल्स, ऑप्शन ए. और अब अरुण के हाथ में है कि आपके अरमानों पे पानी फेरते हैं या नहीं. He is not smiling. Yeah. Doctor, I'm not supposed to smile, right? I wish I could smile for the option that you've given. But my question to you is, when you're deciphering this answer, right? If there are heavy metals, salts in water, that would cause ailments. Or lack of oxygen in water would kill life forms. Don't you think one of those could have been the answer? I'm just asking. No, because as far as my memory goes, alum helps in coagulation of mud particles. I cannot add more oxygen, cannot remove gases. So I would go with A. Darao mat. And with that smile, I'll tell you, it's the correct answer. It is the correct answer. You could smile. This is the problem. ये सारे innocent लगने वाले ना, सब अंदर से थोड़े से devilish हैं. सारे के सारे, सब, all the same. But you know something, Arun, you teased us with that water story and then you left it. वो बताओ यार, please, we really want to learn about that. Sure.
See, India has so many water stories to tell. Unfortunately, we've not marketed it really well in the global platform. When you look at Hyderabad, there are two large tanks called Himayat Sagar, Osman Sagar, and South India produced one of the most phenomenal engineers of all time, Sir Vishweshwaraya. So this is where the great minds came together, that of the Nizam, that of Sri Vishweshwaraya. Hyderabad used to get flooded. The city has a beautiful river called the Musi. Even today, just outside of the Telangana High Court, when you walk along the banks of the Musi River, you would see this brilliant architecture, and what a sight, what a sight. So this river used to flood most parts of the city. So then they came up, we're talking about today being the modern era, technology, machinery, and more, right? But let's go back 80 years, 90 years, 100 years and more, where they actually, with men, women, labor, and tools at that point in time, they established large reservoirs based on the topography of Hyderabad, and they streamlined it into the Musi River and ensured that the city went without flooding for several decades. But then came modern greed, which meant we built lake view apartments, lake view roads on our lakes without our lakes to be viewed. Unfortunately, Hyderabad got flooded the last 2 years, and it's been a repeat threat again and again. Not just Hyderabad, Gurgaon, Bangalore, Chennai. We should go back and look at what our ancestors have left as water literature and learn from it. So definitely. And she comes from such a beautiful city, and more reasons for her to keep smiling. Congratulations. You've played so well, and really happy. Arun, and I'm so happy we have you on the show, क्योंकि आप ही हमें कहानियां बताते हैं नेचर के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, and you know, you tell the story so passionately, और ये sincerity जो है ना, इसको कोई fake नहीं कर सकता. So really, thank you so much, and thank you so much for sharing that knowledge, because we love to learn all these things. So thank you, Arun, and congratulations to Asna. 16,000 rupees are yours, and now this is to your number, Bhakti C. 32,000. This is yours. How can you get this wrong? This is your last question of the silver tier. और ये आपसे पूछने आ रहे हैं गौरव गर्ग. General knowledge का सवाल है ये. Your last question of the silver tier. So Asna, you study a lot, but आपने कहा कि आप sports बिल्कुल नहीं देखती. So what is it that is extracurricular for you? What is it that keeps you entertained, maybe between the studies? Cultural competitions like, fancy dress. And vegetable carving, mime. I'm very good at mime. And is there any particular character that you emulated in the fancy dress competition? Any memory you'd like to share with us? Oh. Because so easy. That's the easy. You went for the easy one. Just white sari. Right? With a blue border. मेरा नाम जबरदस्ती डाला गया था fancy dress में. So I didn't know what to be. तो मैंने मदर टेरेसा की white साड़ी पहन के चली गई थी मैं. So आशना, पानीपत का हमारे हिस्ट्री से एक बहुत गहरा नाता है. 3 बहुत फेमस लड़ाई पानीपत में लड़ी गई हैं. तो मेरा आपसे सवाल है, famous as the place where 3 battles were fought, the city of Panipat is located in which present day Indian state? जहां पर 3 लड़ाई लड़ी गई थी, वो पानीपत आज भारत में किस राज्य में है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, एंड ऑप्शन डी हरियाणा. तो पानीपत के 3 जंग हुए थे 1857. I don't remember the years. 1857 में एक था शायद. I'm not sure. भूल गई मैं. तो but I know पानीपत is in हरियाणा. तो I'll go with D, हरियाणा. बिल्कुल. कब हुई थी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ हुई थी उससे फर्क पड़ता है. तो आप कह रहे हैं हरियाणा, तो डी हरियाणा को ग्रे, डी हरियाणा ग्रे कर दे. कर दीजिए. कर दीजिए भाई. देखिए, चौथा सवाल भी पानी के ऊपर था, 5वां सवाल भी पानी के ऊपर है. गौरव बताइए, सही जवाब है या नहीं है? अर्चना, हैव यू बीन टू पानीपत? क्या आप गई हैं या हरियाणा में कहीं भी आई हैं आप? नहीं. I have not. बता दिया आंसर. That's not fair. I came to Hyderabad in 2017 and now I invite you to Haryana. Yes, that is the right answer. Very well done. Yay! I will come to Haryana for sure. I like Haryanvi dialect a lot. It's very rude. किसी को कुछ बोलना है तो हरियाणवी में बोलना मजा आएगा. You mean rustic. That's the word you're going for. Rustic. It's very rustic. Rustic. Yeah, it's rustic. Rustic.
गौरव आपको सुनाएंगे थोड़ी, वो आपको हरियाणवी सुनाएंगे, आप हैदराबादी सुनाइए। आइए थोड़ा हो जाए ना, थोड़ा रीजनल डायलेक्ट। मैंने तो सुना दिया, मैंने तो हैदराबादी सुना दिया, आप कुछ हरियाणवी में सुना दीजिए। वैसे गौरव चौधरी भी हरियाणा से हैं, कुछ उनको भी मौका दिया जाए, हमने तो सुना दिया। भाई या तो गलत बात से यार, न्यू थोड़ा ना, क्या करें, बीट शो में न्यू उठा के ला दिया तुमने। दुनिया बहुत आगे निकल रही है, मैंने क्या मेरा बस इतना बहुत है, आई थिंक। I really like this dialect, you know, it's so nice. गौरव आप बच नहीं सकते, आपको गाना सुनाना पड़ेगा। नहीं यार, मेरे को गाना नहीं आता, कमाल, ये क्या बात है। बट मैं अच्छा भला बचा हुआ बैठा था, छुपा हुआ बैठा था, अचानक से मेरे को कहां से बुलाया बीच में, और चलो ठीक है, बट गाने की डिमांड हो गई है, सुनना होता है यार, गाने नहीं आते मुझे। जी वो बेचारे स्नूज मोड में बैठे हुए थे, स्नूज मोड में, ठीक है, आपने बिल्कुल जगा दिया उनको। ऐसी बातें नहीं करते मियां। काइको लाया इधर। Oh my God, it sounds so weird. काइको बोले, it's like daily हम लोग ऐसी बात करते। Now that you guys are saying काइको, it's sounding so weird. नहीं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैदराबाद में हैं, और मैंने ना देयर वाज अ टाइम, मैंने ना यूट्यूब पे एक बार एक कोई हैदराबादी मूवी देखी थी, और वो पता नहीं क्यों ऐसे मैं मतलब टाइम पास के लिए देख रहा था, और वो काफी उसमें कॉमेडी थी, तो वो अच्छी लगी मुझे। और उसके बाद में मैंने 4-5 हैदराबादी मूवीज बैक टू बैक देखी, तो काफी कुछ ना वो मतलब लगता है काइंड ऑफ, वो एक गुल्लू दादा होते हैं शायद हैदराबादी मूवीज में, बहुत फेमस कैरेक्टर है। हाँ, तो वो 2-3 कैरेक्टर जैसे होते हैं, और वो मतलब ना अगर नॉर्मल बात भी करते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। तो आई थिंक हैदराबादी लैंग्वेज इज क्वाइट गुड इन दैट सेंस, जहाँ पे अगर कुछ सैड होगा या कैसा भी इमोशन होगा, आई थिंक यू विल फील हैप्पी फ्रॉम विद इन। आई थिंक दैट्स द रीजन दैट यू आर स्माइलिंग ऑल थ्रू आउट। You'll end up laughing. I mean, that's the reason that you are smiling, maybe, all throughout. हम एक चीज भूल रहे हैं, हमने सबको गुड लक दिया था, और हमने असना को अभी तक गुड लक नहीं दिया, हमारे वाला। अरे बिल्कुल देना पड़ेगा, तो पर इनको देंगे जब इनका गोल्ड टियर, अभी गोल्ड टियर शुरू होना है, तो पहले तो सेलिब्रेट करते हैं दैट यू क्लियर्ड द सिल्वर टियर, सो वेल डन, हाफ डाउन, हाफ टू गो, कांग्रेचुलेशंस। 32,000 रुपीस इज व्हाट यू गॉट। अब आप 32 को ले जाकर 10 लाख के ऊपर बिठा सकती हैं अगले 5 सवालों में, पर उसके पहले हम देखना चाहेंगे कि जो प्लेयर पूल है उसमें लीडर बोर्ड कैसा लग रहा है। जो क्षितिज, प्रणीत और चंद्रकांत खेल रहे हैं, तो आइए देखते हैं कि उन्होंने कैसा किया है प्ले अलोंग में। How many did they get right? Ooh, you've got Kshitij at 7, Chandrakant at 6 and Praneeth at 6. मामला बहुत ही क्लोज हो रहा है। Ooh, very close between the three of you. पर देखिए, वो तो चैलेंजर तब बनेंगे जब असना यहाँ से जाएंगी, जब पोजीशन विकेट करेंगी, तब। उसके लिए अभी बड़ा टाइम है, क्योंकि अभी है उनके सामने उनका गोल्ड टियर, जिसमें पूछे जाएंगे 3 सवाल। और अब जैसा कि जीजी ने कहा था, अब उनको सेकंड हाफ ऑफ द गेम के लिए गुड लक कहना चाहेंगे इन आवर टिपिकल यू वर्सेस यूट्यूब स्टाइल। एवरीबॉडी रेडी? 1 2 3 कम ऑन। There you go. तो भाई आइए आपको मिलाते हैं आपके गोल्ड टियर के 3 क्रिएटर्स से। ये है सीमा विद इंग्लिश, सुचारिता विद फिल्म्स एंड रणवीर विद फूड। और आपको ये भी याद दिला दूं मैं, असना आपका नाम चेंज करके एक एच लगा देने चाहिए आगे, हंसना, क्योंकि आप हंसती हैं तो बड़ा मजा। बचपन से यही चलता आया है। हिंदी क्लास में ऑपोजिट से क्लास में कोई रोना आता तो पूरी क्लास मिलकर हंसना बोलती थी, जस्ट टू टीज मी, बट इट्स असना। आपका नाम है असना, आपका काम है हंसना, so that's what it is, that's what you have to tell people। हम चाहेंगे कि आप हंसती रहिए। और एक अच्छी खबर मैं आपको दे दूं, जिससे शायद आप और हंसें, कि आपने पहले टियर में एक भी असिस्ट यूज नहीं किया, तो मतलब एक कैरी ओवर हो गया है। अब आपके पास गोल्ड टियर में 2 असिस्ट अवेलेबल हैं खेलने के लिए। और अगर आप गोल्ड टियर में भी कोई असिस्ट ना यूज करें, तो डायमंड टियर में आपके पास एक बहुत ही स्पेशल एडवांटेज होगा, पर आई विल गेट टू दैट व्हेन वी रीच देयर। फिलहाल आपके गोल्ड टियर का लाइनअप आपसे पूछते हैं। कौन आपसे पूछेगा पहला सवाल? वो 64,000 रुपीज। आई वुड लाइक टू गो विद सुचारिता। Entertainment. Sucharita, I will ask you the question. Yes, it is you, my friend. Over to you. One of the most fascinating things I find जब मैं फिल्में देखती हूँ, जब उनके बारे में बाद में रिसर्च करते हैं, because when you're writing about
the films. कितने authentically फिल्मों में vocations को, professions को दिखाया गया. How much research has gone into the writing. So do you do that like when you're watching a movie when there's doctors in it and there's lots of shows also. कितने serials और web shows है जिसमें medical profession ऐसे तो देख के आपको भी लगता है कि यार ये थोड़े science की research और कर लेते, डॉक्टर ऐसे नहीं होते. Sometimes like मुन्ना भाई MBBS. मतलब ये या नहीं? मुन्ना भाई कॉमेडी वाइज तो ये कॉमेडी वाइज तो ये, बट ऑब्वियसली मेडिकल टर्म्स वाइज तो थोड़ा अप एंड डाउन. बट दीस डेज देयर इज अ लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग ऑन. व्हेन दे डू अ मेडिकल टीवी शो कुछ भी रहा तो दे डू अ लॉट ऑफ रिसर्च दीस डेज. या लाइक ग्रेज एनाटॉमी, स्क्रब्स, इतने सारे बड़े शोज हैं. डॉक्टर हाउस. Correct. But let's now come to the question that I'm going to ask you. Sawal, I'm going to talk to you about movies. फिल्म्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा ना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो कई सारे लोग थोड़ा सा बुरा मान जाएंगे. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, एवेंजर्स एंड गेम में which video game does the depressed Thor get addicted to? All right, you see depressed Thor in that film and he's addicted to a video game. You have to tell me what is the name of that video game. 4 options: A. Rocket League, B. Call of Duty, C. PUBG या फिर D. Fortnite. तो आपने क्वेश्चन पूछ दिया थॉर के बारे में, and Thor is my favorite character because it's played by Chris Hemsworth, and I like Chris Hemsworth. He's an amazing actor, nice comic timing, and Thor is my favorite Marvel comic character. So I have watched Avengers Infinity War and Endgame quite a few times, and I know the answer to this question. It is something my cousins also play. So it's D. Fortnite. D. Fortnite. Okay. तो आपसे I think पूछना नहीं पड़ेगा कि आप श्योर हैं कि कोई डाउट है या कुछ, क्योंकि काफी पक्का लग रहे हैं आप, पक्का. चलिए तो D. Fortnite को ग्रे करते हैं और सुचारिता हमें बताएंगी कि ये सही है या आप अभी असना का एंड गेम करने वाली हैं. So you remember the moment in the film जहाँ पे वो depressed Thor दिखाई देता है और वो गेम खेल रहा होता है with a huge belly, some noob master के साथ खेलता है वो. Wow. So you've seen the film multiple times, so that is the correct answer. Thor is playing Fortnite in Avengers Endgame. And yeah, Chris Hemsworth is also like yum. या पर मैं बताऊं, जैसे असना एक बारी फिर से बोलना, क्रिस हेम्सवर्थ. जैसे आपने I'm married. नहीं पर जैसे आपने क्रिस हेम्सवर्थ का नाम लिया था ना, इतने प्यार से उसकी मम्मी ने भी उसका नाम नहीं लिया कभी, जैसे आपने लिया उसका नाम. क्रिस हेम्सवर्थ. I like his movies a lot, and he has a very good comic timing too. ठीक है, अब कवर कर लो, पर कोई बात नहीं. मैं भी चार्लीज थेरॉन का नाम ऐसे ही लेता हूँ, थोड़ा शर्मा के. मन में भी थोड़ी लज्जा आवे है. And of course, Sucharita will tell us a little more about this film. Yeah. So when he's playing online Fortnite with Korg on his PlayStation 4, the player known as Noob Master 69 abuses Korg, leading the latter to ask Thor to defend him. Fortnite वैसे on a side note 2017 में launch हुई थी video game, and Avengers Endgame, you know, of course went on to become the highest grossing film of all time, जिसके आधे पैसे तुमने दिए. Clearly you've seen it I don't know how many times to be so sure. Fortnite within 5 seconds. So thanks on behalf of Marvel. And the great thing is that Korg is actually, I don't know if you know this, Asna, but Korg is played by Taika Waititi. जिन्होंने, who is the director of Thor Ragnarok. Independent movies. I think Korg is definitely one of my favorite characters in the Marvel universe. It's my favorite. So cute. Anyway, हम आगे बढ़ते हैं अभी गेम में, क्योंकि आप जो हैं गोल्ड टियर पे, you've got off to a flying start. You are now at 64,000 rupees. We have to go to question 7 now for 1,28,000. Who will ask this question? I would like to go with food as my next category. Oh, बढ़िया. तो रणवीर पूछेंगे आपसे food question. Over to you. आपको बहुत कुकिंग पसंद है ना, असना? बहुत ज्यादा. मुझको भी कुकिंग बहुत पसंद है.
अच्छा, एक thing I'll ask. Let's clarify this. हैदराबादी बिरयानी या लखनवी बिरयानी, कोई एक चूज कीजिए आप. लखनऊ बोलेंगे, वो लखनऊ से है. नहीं, लखनऊ से है. That's आपने हैदराबादी बिरयानी, like हैदराबादी दम बिरयानी I'm talking about. चॉइस बहुत सिंपल. हैदराबादी बिरयानी या लखनवी बिरयानी में कोई भी लखनऊ वाला, लखनऊ, मेरे को एमएलए का इलेक्शन नहीं लड़ना लखनऊ से, फिर भी लखनवी बिरयानी. दूसरी चीज, अगर आप बोलेंगे कि लखनवी खिचड़ा या हैदराबादी हलीम, तो मैं कहूंगा हैदराबादी हलीम. तो मैं no arguments क्योंकि no arguments there, right? But you know the dish that I love the most from Hyderabad? It's not a lot of people, you obviously would know it. सहरी का खाना है कीमा खिचड़ी खट्टा. It's actually खिचड़ी खट्टा कीमा. Nothing like that. I think it's the most amazing comfort food to start your day. And I tell everybody goes during Ramadan time. और मैं यहाँ पर भी सबको बताता हूँ कि सब जो है शाम को इफ्तारी के टाइम जाते हैं, सुबह सहरी के टाइम जो खिचड़ी खट्टा कीमा है, जिस भी सीक्वेंस में इसने बोला है उस सीक्वेंस में have it. It's the most amazing, warming comfort food ever made on the planet. Yes. But बिरयानी लखनऊ. ठीक है, जाने दीजिए. आपने हैदराबाद की तारीफ कर दी तो ठीक है, जाने दीजिए. बस मेरे 500-600 वोट हो गए लखनऊ. हमारा दिल बहुत बड़ा होता है हैदराबादियों का. No, but this will continue. I think Hyderabad and Lucknow will always have that food war, which although Hyderabad knows it's lost, but it still keeps fighting. But it's all right. So we'll move on to the question. All right. क्या करें भाई, ये मजबूर हैं हम लखनऊ से. So this question that's coming next is again, very typical to both the Nizams and the Nawabs. While the question is from Lucknow, but both the Nizams and the Nawabs used to love interesting ingredients. They used to love how people used to fool them by using different ingredients and calling it different names, right? कैमोफ्लाज बोलते हैं ना, कि कुछ खिलाया और कुछ बोल दिया, और जो नवाब साहब गेस नहीं कर पाए या निजाम साहब गेस नहीं कर पाए, and they used to pay him a lot of money, and that's how the cooks used to earn by fooling the kings. All right, so this is a question based on that. Okay, so the question is, famous in the Awadh region of Uttar Pradesh, what is the main component of the dish called Benami Kheer? A, onion, pyaz. B, garlic, lasan. C, tomatoes, tomato. D, potatoes, aloo. So garlic in a kheer is very unlikely, and onions, onions भी नहीं हो सकता in a kheer. Tomatoes in a kheer, potatoes in a kheer. प्याज की खीर, टमाटे की खीर, लहसुन की खीर. It just rings some bells inside. लहसुन की खीर. Should I take clue or should I go with my instinct? I'm confused. अगर आप कंफ्यूज हैं तो आपके पास तीनों असिस्ट अभी अवेलेबल हैं, तो आप तीनों असिस्ट में से खेल सकती हैं. Ask the player pool, share a clue, and then of course there is change the question. If I lose, I go 2 steps down, right? 1 step down, you go to 32,000. आपके पास अभी 64 हैं, you will go to 32,000. If you get it right, you will go to 1,28,000. Your money will double. I have a feeling B&D में बड़ा डाउट है. B&D में बड़ा डाउट आ रहा है. I have a gut feeling for garlic. लहसुन की खीर. लहसुन की खीर sounds familiar to me. I'll go with B. Let's see. Nothing to lose. Or so much to lose. Yeah, I wouldn't say nothing to lose. I would say there is. Yeah. There is 32,000. I have a very strong gut feeling.
For लहसुन की खीर, which is garlic. Okay, तो इसको ग्रे करें, सिलेक्ट करें, कर दीजिए, ग्रे कर दीजिए, ग्रे कर जी कर दीजिए. Yeah. Okay, if Asna gets this right, she goes to 1,28,000 rupees. Garlic को हमने कर दिया है ग्रे. बेनामी खीर, Ranveer, that is the first time I'm hearing about that. So please tell us first if this is the right answer or not. असना, आपने प्याज क्यों नहीं चुना? अनियन क्यों नहीं चुना? Because प्याज की खीर कभी बन ही नहीं सकती. I've never heard about लहसुन की खीर. Rings some bells. प्याज in a खीर. I don't like प्याज. I hate प्याज personally. I hate प्याज. तो आपको एक सवाल पूछता हूँ मैं. Because you hate प्याज. अब मान लीजिए कि आप निजाम हैं. तो अगर मैं आपको एक ऐसी चीज की खीर खिलाऊं जो आप गेस भी नहीं कर सकते, तो आप मुझे ज्यादा पैसे देंगे या एक गेसेबल इंग्रेडिएंट के साथ ज्यादा पैसे देंगे? नहीं, always Remember the impress question? the nizam. Camouflage. Always impress the nizam. I would So pay you which more is a if I better wouldn't- camouflage? So which is a better camouflage? An onion is a better camouflage which will get me more money या फिर लहसुन? मुझे लहसुन की खीर का मुझे आइडिया एक दिमाग में टिंग टिंग आ रहा था. आपने ये कहा कि भाई प्याज की जो है वो खीर नहीं होती है. प्याज के बड़े मीठे बनते हैं लखनऊ में, लेकिन खीर जो है वो लहसुन की बनती है. बी इज द करेक्ट आंसर. That's so प्याज mean, का yeah. हलवा That's so बनता mean. है. प्याज का हलवा बनता है और मैंने बनाया है ऐसे एक शो पे, नेशनल टेलीविजन पे. लोगों को यकीन नहीं आया. प्याज का हलवा बनता है और आप गेस नहीं कर पाएंगे वो प्याज. और मजे की बात बताऊं, लहसुन की खीर बनाने में की इंग्रेडिएंट क्या है लहसुन का फ्लेवर निकालने के लिए, वो भी आपके क्वेश्चन में आ चुका है. एलम फिटकरी. फिटकरी. हाँ. I was literally sweating. That's what all of us do for a living, maybe make people sweat, so it's all right. एक बात बताऊं असना, अगर आपने लखनवी बिरयानी को इतना इंसल्ट नहीं किया होता ना, तो फिर रणवीर ने ऐसा नहीं किया होता आपके साथ. और करो इंसल्ट और. No, you were wonderful. You were wonderful. I think it was a great guess. A good way to remember it is, ये जो पूरा ट्रिक है वो ये होता था कि लहसुन को बारीक बारीक स्लाइस किया जाता था और जब खिलाया जाता था नवाबों को तो वो बादाम स्लाइस जैसे टेस्ट आता था उनका. So you could never guess कि बादाम. जी, तो ये गेस नहीं कर सकते थे कि वो बादाम की खीर है या लहसुन की खीर है. और जैसा मैंने आपको पहले कहा, कुछ डिशेस जो हमारे कल्चर में, कुइजीन में बहुत फेमस हैं. एक है शाबदेग, जिसमें कि कोफ्तों को और टर्निप्स को साथ में पकाया जाता था रात भर, और आप गेस नहीं कर सकते थे कोफ्ते कौन से हैं, टर्निप्स कौन से हैं, बिकॉज वो रात भर पक्के और बिल्कुल सेम टेक्सचर के हो जाते थे. लहसुन की खीर है, प्याज का हलवा है. दक्षिण भारत में कई बार जो आपकी अशरफी है, जो बादाम की अशरफी है, वो पहले अशरफी बना के निजाम साहब को खिलाई गई थी. उनको लगा कि वो सोने का सिक्का खा रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली बादाम की अशरफी थी. तो हर कल्चर में ऐसे बहुत सारे डिशेस होती हैं. एंड कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, डू वेल. Thank you. I will try प्याज का हलवा. पर yeah, you must, and you can go to Chef Ranveer Brar, his channel, और वहाँ पे आपको ऐसी बहुत अद्भुत रेसिपीज और अलग अलग कहानियां सुनने को मिलेंगी, तो जरूर वहाँ पे जाइए. पर देखिए, जैसे कि शेफ्स निजाम को ब्लफ करते थे, वैसे रणवीर ने आपको ब्लफ कर दिया. पर एंड में आपने सबको ब्लफ कर दिया, because you have got to 1,28,000 rupees. Well done. We can double it to 2,56,000 with question number 8, the last question of the gold tier. आपने अभी तक एक भी assist use नहीं किया है. 7 सवाल हो चुके हैं. Will that happen in the 8th? Let's see. Who's left? English literature. Seema Picado with English. That's right. आपने इनको Let's Talk Academy channel पे देखा है YouTube में, और अब it is time for her to talk and ask the question. Question number 8, 2,56,000. Over to you, Seema. Wow. So Asna, I have to say that my heart was racing with that last question, and I think you aced it.
and you wasted this far. So this is a good question for you because this is related to vocabulary. So I'm hoping that whatever you've heard from your daughter or whatever it is that you hear in your everyday life while you're on social media should help you with this question, because this is related to vocabulary. So let's have a look at our question. If a dog is canine and a cat is feline, then which of these following creatures is called accipitrine? I'll give you your options. Option A, crow. Option B, bat. Option C, hawk. And option D, parrot. My science knowledge says bat is Chiroptera family, so something like that. Parrot is Psittacus. Yes, parrot is Psittacus. Crow. Crow का scientific name क्या था? Corvus था, and Corvus splendens. Bat was parrot is Psittacus. I don't know what hawk is. I'm pretty sure it's not B, D. A and C. A भी नहीं लग रहा है मुझे. Answer should be C. Yeah, I will go with C. Of course, if you're not sure, you still have the 3 assists that are available, so you can play one of them if you want. They share the clue, ask the player pool, change the question. The stakes are pretty high. You are at 1,28,000. तो अगर आपने सही जवाब दिया तो it's 2,56,000. अगर जवाब गलत दिया तो आप 64,000 पे चले जाएंगे and you'll have to leave the game. So thing is, I'm very good with eliminations, and you write NEET exams, you should be good with elimination when you become a doctor. Based on my elimination technique, 12th class zoology knowledge that I still remember, it's not A, B and D. I don't know what C is. So I would like to go with option C. Is that your final answer? Yes, it is my final answer. Please don't scare me like that. It is my final answer. Just asking you because it's my job to ask you. So I'm asking you, so we'll select C, hawk. By process of elimination, Asna has got to hawk. अब ये जवाब उनको उड़ाता है हॉक की तरह या फिर एलिमिनेट कर देता है उनके प्रोसेस की तरह. Oh my God. Seema will tell us that. Seema, over to you. Okay, well, Asna has mentioned that she's good at elimination, where she has to deduce the right answer based on her knowledge. So, Asna, like I mentioned to you, up until now, your knowledge did not fail you. But in this question, did it? I mean, you chose hawk. I mean, you didn't choose parrot, you didn't choose bat, you didn't choose crow. What about these other 3 options did you feel were not part of the accipitrine vocabulary? So the thing is, parrots say we get a disease, the psittacosis. So something PSI से कुछ होना चाहिए था word. Bat का, yeah, parrot, bat, they don't characterize, right? Bat is not. Oh, I can't answer. I'm blank at the moment. My heart's racing. Okay, well, Seema, you want to put her out of her misery and put us all out of our misery as well because we are invested with her. Yes, I mean, I really want her to go to the next tier because this is the golden tier, and from here she moves up if she gets the right answer. And yes, I think she does. Her law of deduction and her reasoning, her law of elimination that she's employed. Congratulations, you are moving to the diamond tier. I am so happy for you.
Oh my God. Wow, amazing. Asna, that means you have cleared the gold tier. You have not used a single assist. You're at 2,56,000. My God, big round of applause from all of us. That is absolutely fantastic. क्या बढ़िया खेली आप. उफ, पहले दिल थम जाए फिर उसके बाद खुश होगा. I need a break. I seriously need a break. Well, Asna, not just you. I think we all need a bit of a break after that. We have all been on this emotional journey with you. Just look at all these faces. Everyone is invested with you. We are all here on this journey. So I think we'll take a break. We won't just take a break for a minute. This is where we'll end the episode. We will come back in the next episode with you and the diamond tier. We'll give you some time to regroup and then go for a knockout punch. और आपको पता है आपने एक ऐसी चीज करी है जो अभी तक हमने यू वर्सेस यूट्यूब में नहीं देखी कि आपने 8 सवाल जो हैं दोनों टियर क्लियर कर दिए विदाउट यूजिंग अ सिंगल असिस्ट. इसका मतलब है डायमंड टियर में आपके पास होगा एक सुपर एडवांटेज, द ऑल और नथिंग गैम्बिट. जी हाँ, क्या है वो, कैसे खेला जाता है, अरे ये सब हम आपको अगली बार बताएंगे जब 2 सवालों में 2.5 लाख से 10 लाख जा सकती हैं असना. और जैसे ये खेल रही हैं मुझे लगता है कि ये तो होना ही है. टच वुड, एवरीबॉडी टच वुड. इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं बिल्कुल असना. और आप लोग भी सब हमारे साथ हैं और आप लोग हमारे साथ अगले एपिसोड में भी होंगे जब असना जाएंगी फॉर गोल्ड, फॉर ग्लोरी, for number 10 to be the You versus YouTube champion. Thank you so much to everybody. Thank you so much to all our YouTube creators for being here. Thank you so much. I know we all need a bit of a break to just calm ourselves down. Seema, आपने हिला दिया सबको, हाँ? हिला दिया सबको आपने यहाँ पे. You know, I was so scared for her, but I think you're awesome. Thank you. I also want to thank Kshitij. अब हमारे साथ इन 2 episodes में थे. Unfortunately, you didn't get a chance to be a challenger, but thank you so much for coming on You versus YouTube. I hope you had a good time and I hope you learned some new things. Oh, absolutely, Gaurav. It was a max out fun time. बहुत amazing show बनाया है और जो contestants है आसना और आगे भी जो आएंगे उनको all the best. बहुत अच्छे cause के लिए हो रहा है, तो अपना best दीजिए और maximum gift दीजिए. Thank you so much, Kshitij. Thank you for the good wishes to all the future players and future challengers. Thank you so much for being here. तो वो थे क्षितिज और हमारे साथ 2 नए प्लेयर्स आएंगे इस प्लेयर पूल में. प्रणीत एंड चंद्रकांत still have a chance in another episode to get on the challenger seat. और हो सकता ही है क्योंकि असना के सिर्फ 2 सवाल बाकी हैं. सिर्फ 2 सवाल? अरे 2 सबसे बड़े सवाल, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10 इन द डायमंड टियर. और हम तो चाहते हैं वो 10 लाख रुपए जीते. उससे ज्यादा पता है मैं क्या चाहता हूँ असना? मैं चाहता हूँ कि आप जीते क्योंकि आपने प्रॉमिस किया था कि जब आप जीतेंगी तो योर beautiful daughter will join us and she will also smile on camera and we all are eager to see her. So we're eager to see her and hear her speak Spanish. तो हम अपनी Spanish थोड़ी polish करके आते हैं और आपसे मिलेंगे अगली बार in You versus YouTube. I'm Gaurav Kapoor. I want to say thank you so much to everyone for watching. Thank you so much. We'll see you next time. 8 सवालों के सही जवाब दिए हैं. 2,56,000 रुपए पे ये हैं. She has cleared the silver tier and the gold tier without using a single assist. Now you may be asking, why do I keep saying without using a single assist? Because अगर आप assist ना यूज करें तो diamond tier में आपके पास last leg पे, final stretch पे एक बहुत बड़ा advantage आता है. क्या है वो advantage? Well, it is called the all or nothing gambit.